क्या कर दिया? ओह, एक मिनट। क्या किया? ओह, सॉरी। Welcome back. Something very special. You can see it is something very special. The bhala or the kundam or the spear, as you call in English, is something very special. And there are moments in this in which you can deceive your opponent. You can actually cheat him. And there are moments like this. Not only the bhala or the spear. These moments can be practiced with lathi, bow, or anything that has attacks in diagonal or straight or like this. This is not an actual bhala. I mean, it is not a real spear. I made this myself. घर के चाकू सब्जी काटने वाले वगैरह लगा के जस्ट आपको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए दिखाया. वैसे ही टेक्निक बो में इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर इंडियन लाठी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं. If I am right, am I right? You are right. I am always right. So the fight scene, a little fight scene. We tried to make a fight scene. If you like that fight scene, please let me know in the comment section. And in the fight scene, the end. क्या बोलते हैं उसको? फाइनल चेकमेट वाला मूव कौन सा था लास्ट में? Chadimura. Yes, it is called as Chadimura. Chadimura. So if you break down the word, if I'm not wrong, there are Chadi and Mura. Mura, yeah. So Chadi means cheating, right? Or yes. something like deceiving, right? And Mura is Sort of technique, sort of bunkai. or what is the actual meaning of Mura? Is it striking or cutting or what is it? It is a technique. Okay, it is Mura. a technique. So it is actually like a fake punch. Now, most of the people out there might say this is too dramatic, too filmy. Of course, the fight scene was very filmy. I made that myself. It is choreographed by your karate TV and so. But even in nowadays, the MMA and UFC वगैरह आप देखते होंगे. आजकल वही एक चीज का प्रमाण है कि हाँ हाँ फाइट होती है तो ऐसी होती है. They are one example for a legit fight, and I do believe that the MMA or UFC fights are real. Actually, fights are like that. So, in that fights also, you might have seen the fake punches will be there, and one uppercut will come, and that will lead to a knockout. Even the real legit fights end up with knockouts, and they are most of the time using these fake movements, fake punch and body shot, or like a fake leg kick. And then they'll go for a knee strike and they'll knock out, right? Yeah. The famous, there is a, I don't know the name, right? But I am very much inspired by that person. He goes by the leg and suddenly he turns and does the elbow. I don't know how it is happening, but very fast. So these fake moments are always helpful in many fights. So the fake moment in the bow or lathi or a bhala can be used by this technique. Yeah, we'll show that. तो ये Yeah. डंडे के साथ कैसे कर सकते हैं? Let us. So suppose that normally if a person hits on the forehead, forehead. If you are a martial artist, most of the time, if you are hit trying like to this, block or only. you will try to move. Okay. So what I'll do is the cheating technique is Chadimura. What I'm doing is
just action as if I am hitting on the forehead. But no, I am not. I am cheating. But okay. Okay. So it looks like the attack. If you are a martial artist, very easily you will get what I am saying. Sir. Yeah. Please. Very easily you will get what I am saying. Camera. हाँ. ये देखो. आपको अभी समझ में आ जाएगा. आपको ये देख के क्या लगा कि मैं साइड से मारने वाला हूँ ना, और मैंने मारा भी वैसे ही. ये एक बार हो गया, 2 बार हो गया, तीसरी बार अगर मैं ये करके ये करूँ तो आपको पता नहीं चलेगा. आप That सोच. is the technique. That is the technique. That is the technique. If I am doing like this, you will most probably go to a duck or a moving technique. But if I do this and go here, you can call this a cheap shot also, but it is technique in the great art of Kalaripayat also. You can use your brain. But Yes, whether yes. it is cheating or Think, whatever. use your brain. Yeah. Yeah. तो ये टेक्निक आप हर जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब एग्जाम में नहीं. एग्जाम में कर सकते हैं क्या? हाँ, टीचर की तरफ आप देख के बोल सकते हैं, मैडम उधर को देख के, तो वो उधर घूमेंगे तो इधर से आप नहीं छोड़ो. मैं ट्राई किया था, मैं बाहर हो गया था. ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू फ्रॉम द फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू. ये देखो हमने लाठी ऐसे घुमाई, क्योंकि स्लो मोशन है तो समझ आ रहा है कि ये लाठी घूम के नहीं आ रही लेकिन सीधा पेट पे आ रही, वरना ऐसे ही होता. ये है भगवान ऊपर से जाएगा, लेकिन क्या होता है आप सोचोगे ऊपर से जाएगा, ऊपर से जाता नहीं, ये घुमा, ए भगवान बचा ले, उठा ले रे बाबा, लेकिन वो पेट में मार दिया. तो आपको समझ तो जरूर आ गया होगा. ये वाली किक मैंने पहली बार ट्राई करी, कैसी लगी आपको कमेंट में जरूर बताना. और ये पापा ने सुबह का कुल्ला भी निकाला. हाँ जी, तो कहने का मतलब ये है, पुराने जमाने में ऐसी वाली टेक्निक भी लोग इस्तेमाल करते थे, या और यहाँ से कर दिया है कि नहीं. बट दिस इज अ वेरी डेंजरस टेक्निक. डोंट यूज दिस एट होम. दिस इज ओनली मेड फॉर डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस बिकॉज इट इज वेरी शार्प. ये चाकू हजाने लग जाए तो खून निकल आता है. I know you already use these fake punch and reverse punch kind of techniques, but in a bow also it is possible. If you learned something new from this video, please like this video and subscribe and press the bell icon. ऐसे तो नहीं बोल सकते भाले से बेल आइकन बताओ, नहीं बताना. No. उंगली से इस बार. Gili. Go different. उंगली से दबाओ बेल आइकन.